శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. కాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మాంగం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహకుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య
ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస అర్పణమస్తు. మో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీభూనీలా సమేత శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే నమః. பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்ட திண்டோள் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு என்று எம்பெருமானுக்கே காப்பிட்டார் பெரியாழ்வார். ஒருவேளை பின்னாளில் தனது திருமகள் ஆண்டாள் பிராட்டிக்கு மணாளனாகி தனக்கு மாப்பிள்ளையாக போகிற வெங்கடகிருஷ்ணனின் பேரழகை யாரும் பார்த்து கண் திருஷ்டி பட்டிவிடக் கூடாது என்று அவருக்கு அவ்வளவு பயம் போலும். அழகு என்றால் எத்தனை அழகு! இந்த பேரழகை வர்ணிக்காத ஆழ்வார்களோ ஆச்சாரியர்களோ இல்லை எனலாம். அந்த திருவேங்கடவனின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு உபயநாச்சிமார்களோடு நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. இதை தரிசித்து திவ்ய தம்பதிகளின் திருவருளை பெறுவதற்கு பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது டி.கே. லட்சுமி கிருஷ்ணசுவாமி. பக்தர்களே, திருக்கல்யாணத்தின் ஆரம்பத்தில் இப்போது கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம், பின்பு சுத்தி புண்ணியாக வாசன கைங்கரியம் இவை நடைபெற உள்ளது. பிரம்மா புனாது శ్రీ వెంకటేశమతి సుందర మోహనాంగం శ్రీ భూమికాంతమరవిందతలాయతాక్షం ప్రాణప్రయా పరమ పంకజ కంభోకంఠం బ్రహ్మేశ వంద్య వరదం అమృతం భజామి. భృగ్వత్రికస్య బమరీచ మధ్యే స్థిత్వాసనే కుశమయే సమధీరయంతం శ్రీశాస్త్రధారమఖిలం విఘ్నో మునీంద్రం భూయో నమామి భువనైకగుణం ప్రసన్నం. శ్రీమతే విఘ్నసే నమః. భృగుమరీచ అత్రికస్య మేభ్యో నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్యద్వరదవక్త్రాద్యా పారిషత్యాః పరశ్వదం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. శ్రోతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం येन సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థవిదే విఘ్నసే నమః. సూత్రాణామన్యక్లుప్తానాం నేత్రం యచ్చస్తదీకృతం సూత్రం వైఖానసం వందే భగవత్కర్మసూచకం. ఓం భగవతో బలేన భగవతో వీర్యేణ భగవతస్తేజసా భగవతః కర్మణా భగవతానగృహీతో భగవతానధ్యాతో భగవన్ ధ్యాత్వా భగవత్కర్మ కరిష్యామి తద్భగవాన్ అనుమన్యతాం ప్రాణానాయం యా. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండరాజకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనిరాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః లోక కళ్యాణార్థం వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యంజ కర్మణి స్తండిలపరిధి పరిస్తరణ సర్వోపకరణ శుద్ధ్యర్థం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం శుద్ధి పుణ్యాహవాచనాఖ్యం కర్మకరిత్యన్నాదో నిర్విఘ్నేన పరిసమా ఆవాప్యర్థం విశ్వక్సేన ఆరాధనాఖ్యంజ కర్మణి త్రంగకరకారాధనం కరిష్యే. ఓం ధారాజరప్తశురమానశేషోదరచ్చరిత్య పరిపూరితేషు అపోభిగృహ్ణన్ ప్రతిపాదకిష్యే కృణోమి దత్తాగం సుతరగం సుధర్మ ఇదమాపశ్యమా శుభతమా శాంతా శాంతరమా శుభా శుభతమా పూతా పుతరమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేధ్యా మేధ్యతమా అమృత అమృతరసాః పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యస్య రశ్మిభిః ఏతే శతం వరుణయే సహస్రం యజ్ఞయాపాశాపతదా పురుత్ర తేభ్యో న ఇంద్రస్య విదోదవిష్ణర్విష్మే దేవా అమంజంతమరుత స్వస్త్యా అస్మిన్ కుంభే ఓం వరుణమావాహయామి ప్రచేతసమావాహయామి భక్తాంబరధరమావాహయామి యాతస్పతిమావాహయామి వరుణాయ నమః. ఆసనం సమర్పయామి. వరుణాయ నమః. పాద్యం సమర్పయామి. అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ఆచమనీయం సమర్పయామి. వరుణాయ నమః. ప్రచేతసే నమః. రక్తాంబరధరాయ నమః. యాతస్పతయే నమః. పుష్పాణి సమర్పయామి. గుడోపహారం నివేదయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. సుధీశ్వరాయ విద్మహే పాశహస్తాయ ధీమహి తన్నో వరుణ ప్రచోదయాత్. వరుణాయ నమః. సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. ఆదో నిర్విఘ్నేన ప్రథమా ఆవాప్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే. విశ్వక్సేనం చతుర్బాహం సంకటికరసమన్వితం జగాపతిం శృంగకేతం సుపుష్పర్ధవాహనం
पूर्वाचारोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेद आग्नेयस्मादजामहे त्वां विश्वेशदात्मं महितो न शम्भो वैराजन्ते धोतनिधत्तां प्रैष्यामदेशो व्यवधानावनादर्यामे सस्तान्दरितां दधातु पद्माकारमण्डले बुम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिदिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभाजने नमः सूत्रपत्ये नमः जगाये नमः सूत्रपतिदिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परसमाप्तिना कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजनां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो मृदानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे वचक्षुरादनं तद्विप्रासोऽपि पञ्चमोजाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसुस्तरस्य त्रिविनोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारासते दीर्घमायुः ॐ भद्रं कर्णे विस्तृणयामदेमा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यदत्राः स्त्रीरङ्गैस्तुष्टभागं सस्तनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिमेवा यत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याह्ने यक्कन्तोः अदिदर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदिदर्जातमदिदर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भत्कुर्वेदोपव्युषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः भूर्भुवस्वरमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तं पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मणि स्वस्ति रध्यास्म हव्यैर्नमधोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयिन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेव सरतः समीराः ॐ भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मर्ध्यरां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आबोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातर महेरणाय चक्षसे यो वश्वतमोरसस्तस्य भार्गदेहनः उशतीरव मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मः आपो जनयथा जनः ओम पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोता सपुनातमा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनमोधया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पनाहिमा शुक्रेण देवनीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतो कुम्रण यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तर ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै बक्वे स्तनमो मीतपृष्ठाः तया मदन्तः सदमा वजग्स्यामतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् द्वादः प्राणिनी शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावनी यज्ञये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुमिः वरिशिष्टैर्ते वमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी रथ्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि सुतितं मातरिश्वन पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मथोदकं पावमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पावमानीर्तिशन्तनः यमल्लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तुनः
देमेर्देमै समाभृताः पावमानी स्वस्य गणैः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतोरसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हिनं पावमानीर्तिशन्तुनः यमल्लोकमधो अमं कामान् समर्थयन्तुनः देमेर्देमै समाभृताः पावमानी स्वस्य गणैः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः संभृतोरसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमा पुनात् सोमस्वस्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमरणाभिपुनादु मा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनात् तच्छयो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तुत्पदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यां दिशदेवार्चयो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमाता पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशग्रहा पशवो मार्जयन्तां उदेत्यां दिश्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायां दिशदिग्निः संवत्सरो यज्ञपधर्मार्जयन्तां मदोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्यदन्तोः तमकृतं वस्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त रिक्माः सप्त इमे लोकाये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वामोषधयो रथाश्च येनेश भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पादर्घ्याजमणीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஆராதனம் புண்ணியாக வாச்சன கைங்கரியம் இனிதே நடந்தேறியது. அடுத்து அஷ்டத்திற்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்துக்கு வந்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அமலநாதிபிரான் அடியார்க்கு என்னை ஆட்படுத்த விமலன் விண்ணவர்கோன் விரையார்பொழில் வேங்கடவன் நிமலன் நின்மலன் நீதிவானவன் நீள்மதில் அரங்கத்தெம்மான் திருக்கமல பாதம் வந்து என் கண்ணினுள்ளே ஒக்கின்றதே என்று பாதாதி கேசம் வர்ணித்தார் திருப்பானாழ்வார். அந்த எம்பெருமானின் திருமேனியில் மின்னிக் கொண்டிருக்கிற அந்த வஜ்ர வைடூரியங்களுக்கு இயற்கையாகவே இத்தனை ஒளியா, அல்லது வலையப்ப சுவாமியின் திருமேனியை அலங்கரித்துக் கொண்டிருப்பதால் அதன் ஒளி இன்னும் மேம்பட்டதா என்று வியக்கத் தோன்றுகிறதல்லவா? இந்த சமயத்தில் ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. ஒரு சமயம் தேவலோகத்திலிருந்து பாரிஜாத புஷ்பத்தை கொண்டு வந்து நாரத மகரிஷி ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் கொடுக்க, அதை அவர் அப்போது தன் அருகில் இருந்த பட்ட மகிழ்ச்சி ருக்மணி தேவிக்கு அளித்தாராம். இதை அறிந்த பூமி பிராட்டியின் அவதாரமான சத்யபாமா தேவி கோபித்துக் கொள்ள அவளுக்காக பாரிஜாத மரத்தையே கொண்டு வந்து அவளுடைய தோட்டத்தில் நட்டாராம் கிருஷ்ண பரமாத்மா. ஆனால் கண்ணனின் திருவிளையாடல் இத்துடன் நிற்கவில்லை. கண்ணன் தனக்கு மட்டுமே சொந்தமாக வேண்டும் என்கிற பேராசையில் நாரத மகரிஷியின் சொல்படி ஒரு யாகத்தை தொடங்கி வேள்வியின் முடிவில் கண்ணனையே நாரதருக்கு தானமாக கொடுத்தாள் சத்யாதேவி. கண்ணனின் எடைக்கு சமமாக வஜ்ரம் வைரம் வைடூரியம் பொன்னும் கொடுத்தால் கண்ணனை திரும்ப மீட்டு அவளுக்கே சொந்தமாக்கிக் கொள்ளலாம் என்று நாரதர் சொல்ல, ஏழுலகங்களையும் ஆள்கின்ற பரந்தாமனையே தராசு தட்டில் உட்கார வைத்தாள் சத்யாதேவி. இங்குதான் தொடங்கியது கண்ணன் விளையாட்டு. எவ்வளவுதான் வஜ்ரம் வைரம் தங்க கட்டிகளும் ஏன் கஜானாவில் உள்ள அத்தனை பொற்காசு மூட்டைகளையும் வைத்தால் கூட கண்ணனின் எடைக்கு சமமாகவில்லை. செய்வதறியாது திகைத்த சத்யாதேவி ஸ்ரீதேவியின் அம்சமான ருக்மணி தேவியை வேண்ட அவள் பக்தியுடன் ஒரே ஒரு துளசி தளத்தை தராசு தட்டில் வைக்க எடை சமமாகியது. பக்தர்களே, நாம் பக்தியுடன் படைக்கும் எதுவும் பகவானுக்கு உகந்தது. அதைத்தான் இப்போது இதன் மூலம் நமக்கு தெரிய வருகிறது அல்லவா? இனி எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அடுத்து ரட்சை பூஜை. துஷ்ட சக்திகளிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள மந்திரித்து ரட்சை கட்டிக்கொள்கிறோம் அல்லவா? அதே போல ஓம் பூஹு பூர்பவஸ்வராமஸ்ய தேவதேவஸ்ய பகவதோ நாராயணஸ்ய ஸ்ரீயப்பதே புருஷோத்தமஸ்ய ஸ்ரீமதிகிலாண்ட கோடி ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यं चक्रमणि प्रतिशरवन्दन देवताराधनं करिष्ये
ఓం యమర్పయంతి మనయో హవిర్యోచో హి దానరబుధా విరాజన్నే తమ్మయ దోషాయస్యానరాగ్నం విపినాని పతంతు. ఓం శేషమావాహయామి, సహస్రశీర్షమావాహయామి, అనంతమావాహయామి, నాగరాజమావాహయామి. రక్షాసూత్ర అధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః. శేషాయ నమః. హాసనం సమర్పయామి, పాద్యం సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి, పుష్పాన్ని సమర్పయామి, గుడోపహారం నివేదయామి, తాంబూలం సమర్పయామి, సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం స్వస్తి నో మిమేతామశ్వినా భగత్ స్వస్తి దేవ్యతీతర నర్వణాః స్వస్తి భూషా అసూరో దధాతున స్వస్తి ద్యావా పృథివీషు చేతునా స్వస్తయే వాయుమపప్రవామహే సోమం స్వస్తి భవానస్య యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయే స్వస్తయా ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అద్య స్వస్తయే వైశ్వానరో వసూరగ్నిః స్వస్తయే దేవామంత్రభవ స్వస్తయే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వం హాసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి మధ్యేరేవతే స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదితే కృధి స్వస్తి బంధామనూచరేమ సూర్యాచంద్రమధా వివ పునర్దధదాజ్ఞాదాజానదా సంగామేమహి స్వస్త్యయానంతారక్షమరిష్టనేమిం మహద్భూతం వాయసం దేవతానాం అసురగ్నమింద్రాసకం సమత్సు బృహద్యశో నావామివారోహేమ భోముచామాంగిరా సంగయం స్వస్త్యాత్రేయం మనాసా చతార్క్ష్యం ప్రియాతమానిశరణం ప్రపద్యే స్వస్తిశం బాధే స్వభాయన్నో అస్తే శుభాగం శుభాం. பக்தர்களே, ஸ்ரீ வைகாரச ஆகமப்படி நாகராஜனையே ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணும் ரட்சை பூஜை இனிதே முடிந்தது. அடுத்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். ரட்சை என்றால் காப்பு. துஷ்ட சக்திகளிடமிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள மந்திரித்த ரட்சையை கட்டிக்கொள்கிறோம் அல்லவா? இங்கே இந்த லட்சோப லட்சம் மக்கள் கண்டுகளிக்கின்ற மலையப்பனின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் எவர் கண்ணும் படாமல் இருக்க மந்திரங்களை சொல்லி அந்த ரட்சையை கங்கணத்தை பரந்தாமனின் திருக்கரத்தில் சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. பகவானுக்கு ஏது திருஷ்டி இருந்தாலும் புன்சிரிப்போடு தன் பக்தர்களின் விருப்பத்துக்கு இணங்கி அதையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார் மலையப்ப சுவாமி. பக்தர்களே, இந்த சமயத்தில் நாம் இன்னொன்றையும் நினைவு கொள்ள வேண்டும். ஒரு வயசான தாத்தா தன் வீட்டு கூடத்தில் சாய்வ நாற்காலியில் கண்களை மூடிக்கொண்டு அமர்ந்திருக்கிறார். அவருடைய பேரக்குழந்தை அந்த கூடத்தில் தவழ்ந்து கொண்டிருந்தது. அதற்கு இன்னும் நடக்க தெரியாது. அது அந்த தாத்தாவை பார்த்ததும் தவழ்ந்து அவரிடம் வருகிறது. ஆனால் தாத்தாவை எட்டி பிடிக்க முடியவில்லை. இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் சுற்றி சுற்றி வந்து முடிவில் அந்த தாத்தாவின் காலை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டு எழுந்திருக்க உடனே கண் விழித்து பார்த்த தாத்தா அந்த குழந்தையை வாரி அணைத்து மடியில் இருத்திக் கொள்கிறாராம். பக்தர்களே, நாம் எல்லோரும் அந்த குழந்தையைப் போலத்தானே. எம்பெருமானை அடைய நாம் எவ்வளவோ முயற்சி செய்யலாம். ஆனால் முடிவாக பகவானின் திருவடியை பற்றி கொண்டோமானால் அந்த பகவானே நம்மை தூக்கி அவனோடு நம்மை இறுக பற்றிக் கொள்வான். இந்த சங்கல்பத்துடன் தானே வைகுண்ட லோகத்து சுக போகங்களையெல்லாம் விட்டு இதோ இந்த திருமலையில் நின்ற கோலத்தில் தன்னுடைய திருவடியை தானே காட்டி நம்மையெல்லாம் அவரிடம் வந்து சரணமடைய சொல்கிறார். அவரது அந்த சங்கல்பத்தை நினைவுபடுத்தவே இந்த ரட்சையை சமர்ப்பிப்பதாக கூட கொள்ளலாம். பிரம்ம கடிகின பாதமோ என்று அன்னம்மையா போற்றிய அந்த திருவடிகளை நாமும் கெட்டியாக பற்றி கொண்டால் எம்பெருமான் நம்மை தன்னுடன் சேர்த்துக் கொள்வான் என்பதில் எந்தவிதமான சந்தேகமும் இல்லை. இதோ அந்த நாகராஜனையே ஆவாகனம் பண்ணின ரட்சையை எம்பெருமானின் திருக்கரத்தில் இதோ சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, எம்பெருமானுக்கு செய்கின்ற அத்தனை உபச்சாரங்களும் அவரது பட்ட மகிழ்ச்சிகளாக போகும் தேவிமார்களுக்கும் செய்ய வேண்டும் அல்லவா? ஆகவே இப்போது அந்த மந்திரித்த ரட்சையை முதலில் எம்பெருமானின் திருமார்பில் அகலாது வீட்டிற்கும் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும், பின்பு பிரிய வராக மகிழ்ச்சியான ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமிதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. இவர்கள் இருவருமே தயாதேவிகள். இந்த தயாதேவிகளின் சிபார்சு இருந்தால்தானே எம்பெருமானின் அனுகிரகத்தை நாம் பெற முடியும். தேவிகள் தானே புருஷகாரமாக இருந்து நம்மையெல்லாம் எம்பெருமானிடம் கொண்டு சேர்ப்பவர்கள். ஆகவே அந்த தேவிகளுக்கும் அவர்களது அந்த உத்தேசத்தை நினைவூட்டுவதற்காக இதோ இப்போது இந்த ரட்சையை சமர்ப்பிப்பதாக கூட நாம் கொள்ளலாம்.
பக்தர்களே, கடுவினைய இருவினைய கடியும் வெற்பு என்றார் வேதாந்த தேசிகன். இந்த பிறவியில் மட்டுமல்ல, எத்தனை பிறவிகளில் எவ்வளவு பாபங்கள் பண்ணி இருந்தாலும் அத்தனையும் இந்த திருமலையை தரிசித்தாலே போய்விடுமாம். ஆக பாபங்கள் செய்பவர்கள் நாம் என்பதை நாம் ஒத்துக்கொள்கிறோம் அல்லவா? நம்முடைய அந்த பாபங்களை எல்லாம் விலக்கி நம்மை நல்ல புருஷனாக்கி எம்பெருமானிடம் அனுப்புவதுதான் தேவிகளின் புருஷகாரம். அந்த தேவிகளிடம் இதையே நாம் வேண்டிக் கொண்டு நம்மை திருத்தி அந்த எம்பெருமானிடம் அனுப்பி அவனுடைய அனுகிரகத்தை நமக்கு பெற்றுத் தருவாறு வேண்டுவோம். இதோ 2 தேவிகளுக்கும் அந்த மந்திரித்த ரட்சையை சமர்ப்பித்து விட்டார். பூப்புனை கண்ணி புனிதனோடு என்றென்னை காப்புனான் கட்ட கலாக்கண்டேன் என்று இந்த ரக்ஷாபந்தன வைபவத்தை தனது வாரணமாயிரம் பாசுரங்களில் ஆண்டாள் பிராட்டி பாடியிருக்கிறாள் அல்லவா? இதையடுத்து இப்போது ஆத்ம ரக்ஷை எனப்படும் இன்றைய திருக்கல்யாணத்தை நமக்காக நடத்தி கொண்டிருக்கும் அந்த அர்ச்சக சுவாமிக்கும் இந்த கல்யாணத்தில் எந்தவிதமான பங்கங்கள் வராமல் இருக்க இன்னொரு சுவாமி அவரது திருக்கரத்திலும் அந்த மந்திரித்த ரட்சையை சமர்ப்பிக்கிறார். இத்துடன் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் இனிதே முடிகிறது. எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் இனி அடுத்து நடைபெறப் அக்னி பிரதிஷ்டை, அதை தொடர்ந்தாற்போல ஹோம காரியங்கள். பக்தர்களே, எம்பெருமானையே இந்த ஆவாகனம் பண்ணி அஷ்டதிக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணி நடைபெறுவதே ஹோமம். ஸ்ரீ பூநிலா சமேத ஸ்ரீனிவாச சுவாமினः வைவாஹிக மஹோத்சவாக்கிஞ்சகர்மணி ஔபாசனாக்னௌ அக்னி பிரதிஷ்டாபனம் கரிஷ்யே. ஏதோன்விந்திரம் ஸ்தவாம் சுத்தம் சுத்தேன சாம்னா சுத்தைः துக்தைர்வா வృద్ధాంశం శుద్ధ ఆసీర్వాన్ నమక్తే. इंद्र शुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धाभिरोधिभिः शुद्धोर्यं निधार्य शुद्धो ममत्य सौम्यः. इंद्र शुद्धो हिनोर्यं शुद्धो रत्नानि दाशति शुद्धो वृत्राणि जिक्तसे शुद्धो वाजं शदासति. मयि देवाद्रविणमाजिदन्तां मय्यासीदस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होतारावणिहन्त पूर्वेरिष्टास्यामधर्मासुमीराः मक्यं जिदन्तममयानि हव्याकोति सत्यामनधोमे अस्तु. ये नोमानिकाङ्गदमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजनामे देवी षडर्वीरुणक्रणोद विश्वे देवास यहमीरयत्थम् महास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामद्विषते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतमसो इत्यनिश्यते. अग्निमश्वत्थादिरिहं व्यवाहकं शिमे गर्भाञ्जलगिन्योमयो भूः घृतयोनिरग्निकृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वादिरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुखिता जिक्षिदेवान्. अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविरप्रसुवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तादुषीमतस्वरुजो वेनावः समुद्रया पपवा अस्य विष्टासदस्य नमसदस्य वः. ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः. इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोम वीरङ्करमञ्जन्तरादे सारण्यं विरुद्धकं दुर्हेकं तस्त्रवनं योदराद तस्मै. ओं भूस्वममावाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओगुं सवरिन्दमावाहयामि ओं भूर्भवस्वस्तिन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं. ब्रह्मणे नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि. प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पुष्णेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं स्फूर्तां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्चधेः. ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि. प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पुष्णेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं स्फूर्तां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्चधेः. ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः परशरस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रसवनात् तच्छित्रेण पवित्रेण पदो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पवो अग्ने गुमोग्रिमं यज्ञं लिखिताग्ने यज्ञमदन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत पुत्रतूर्ये यूजमिन्द्रमवृणीर्धं पुत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था. विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि. गन्धर्वोऽसि विश्वावसुर विश्वस्मादेशतो यजमानस्य परिधरिणीडितः ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणयज्ञं देवतावर्धयित्वं नागस्य पुष्टे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुहृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्चधेः. ओं प्रणया सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणयज्ञं देवतावर्धयित्वं नागस्य पुष्टे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुहृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्चधेः. ओं प्रणया कोमप्रणितसमप्रणयित्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सुखं साधयन्तु नः. प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि
रुद्रानावाहयामि अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि हस्मिनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतेरिष्टनिर्वभामि ब्रह्मणेरिष्टनिर्वभामि इन्द्रागिरिष्टनिर्वभामि अग्नेयरिष्टनिर्वभामि सोमागिरिष्टनिर्वभामि अग्नेयरिष्टनिर्वभामि सोमागिरिष्टनिर्वभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टनिर्वभामि प्रजापतेरिष्टनिर्वभामि ब्रह्मणेरिष्टनिर्वभामि इन्द्रागिरिष्टनिर्वभामि वसुभ्योरिष्टनिर्वभामि मरुद्भ्योरिष्टनिर्वभामि रुद्रेभ्योरिष्टनिर्वभामि अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुवेरिष्टनिर्वभामि बृहस्पतयेरिष्टनिर्वभामि मित्रागिरिष्टनिर्वभामि वरुणागिरिष्टनिर्वभामि आदित्येभ्योरिष्टनिर्वभामि अश्विभ्यारिष्टनिर्वभामि पूष्णेरिष्टनिर्वभामि कक्षागिरिष्टनिर्वभामि कक्षदेवता सोमागिरिष्टनिर्वभामि औपासनयज्ञागिरिष्टनिर्वभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्योरिष्टनिर्वभामि सर्वदेवेभ्योरिष्टनिर्वभामि आद्यन्त्रप्रतिस्रगामि अग्नेत्योदर्शि समितसि स्वाहा अमृतमजवारणमसि अन्तरितमृक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रतिष्ठितमृक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्पतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्नादिपदापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासविधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षत आच्य चरुभिः जिमामे अग्निष्टगाधेन वसन्त्वेका च शतं च सहस्रं च युतं च निगितं च प्रगितं च अर्पणं च पुण्यर्पणं च समत्रश्च मध्यं च अन्तश्च परार्थश्च इमामे अग्निष्टगाधेन वसन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रमे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसमा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पणमानय अयन्त यत्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्तस्वजेद्वर्तगिरास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुम स्वाहा अदितेन्वमकुस्ताः नमतेन्वमकुस्ताः सरस्वतेन्वमकुस्ताः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यक्रमणि औपासनाग्नौ आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रियादोष प्रायश्चित्तार्थमतो देवादि षट्वैष्णवहमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुमा ओं अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानदधेवनं समूढमस्य भागं श्रेय स्वाहा त्रीन् पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विश्वजगतो प्रधानि विस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्य स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि विचक्षणादर्ग स्वाहा तद्विप्रासो व्यमन्यमोजाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदक स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमकुस्ताः हनुमतेन्वमकुस्ताः सरस्वतेन्वमकुस्ताः देवसविदप्रासामीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
పక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొక్కలు చూచేరొకరొకరు. కన్నుల నిత్తురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి మొక్కలు చూచేరొకరొకరు. పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే. మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీ. స్మార్తాదికం కర్మణిహిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः. अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या परिमितशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानामनेककोटिब्रह्माण्डानां एकदमे पृथिवीं यत्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कार महदव्यक्ताख्य सप्तावरणैरावृते अस्मिन् महदि ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रनीकाख्य अष्टदिग्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिदे अमरावते तेजोवदे संयमने रक्षोपदे सिन्धुपदे गन्धवत्यलकापदे यशोपदे त्यष्टरेमपुने विराजते इंद्राग्नियम निरृतिवर्णवायुकुमेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोका लोकाचलवलहिते लवनेक्षुसुरा सर्पित दिक्षेर सुत्तोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्भोप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मल पुष्पराख्य सप्तद्वे पद्वेपिते माहेन्द्रमनघ सख्य अदृक्षद्विन्ध्यवार यात्राख्य सप्तकुल पर्वत विराजिते भारत किं पुरुषहारीरामृतपत्राश्वकेतकमालक हिरण्यकरमणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकभस्ति पुन्नाक गन्धर्व सौम्यवर्ण भरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेक जन्मसु यह जन्म निजायेतत् क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थिकेश्वरहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्धं दश पूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितधामातपसङ्घातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्या तिलै सूर्यमण्डल पर्यन्तं कृतराशेर्वर्षधहस्रापधाने एकैक तिलापकर्षण क्रमेण सर्वरास्यपकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवासतीत्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामशान्तपनवाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्रीविखनो मुनीन्द्रमदानुसारविर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिः रिक्तकुह्यधर्मपुराण इतिहासकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये।
ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశారంగ కౌమోదగీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణోఖ్యాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజోరత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజస్సామాధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవత్స్యమన ఆప్నవాన ఔర్వవేదన పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అయో నిజాం భృగో సంకల్పతనయాం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యా రాసౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి ఋగ్యజస్సామాధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణీ ధ్రువత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహో శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవేతుభ్యం బ్రహ్మలోకజిగీర్షయా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసేత్ ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్య సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదాన ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் பிராட்டிமார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு கன்யாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு மங்களகரமாக நிறைவேறியது. அடுத்து திருமாங்கல்ய பூஜை. திருமாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் போன்ற உபச்சாரங்களை இப்போது செய்வார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் வழக்கம் போல சில நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். ஒரு ஊரில் பணக்காரர் ஒருவர் வாழ்ந்து வந்தார். சரியான கஞ்சப்பிரபு. எச்சக்கையால் கூட காக்கா ஓட்ட மாட்டாராம். யாருக்கும் ஒரு பைசா தருவதற்கு கூட அவருக்கு மனசு வராது. ஆனால் அவருக்கு வைகுண்டம் செல்ல வேண்டும் என்று ஆசையாம். ஒரு மகானிடம் சென்று நான் வைகுண்டம் போவதற்கு ஒரு எளிய வழி சொல்லுங்கள் என்று கேட்டார். அவர் நீ ஏழைகளுக்கு தர்மம் செய் என்றாராம். பணக்காரருக்கோ தன் செல்வத்தை விடவும் மனசில்லை. ஆனால் வைகுண்டம் போக வேண்டும் என்ற ஆசையையும் விட முடியவில்லை. ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஏழைக்கு ஒரு பிடி அரிசி தருவார். அதனால் செல்வமும் குறையாது, தர்மம் செய்தபடியும் ஆகும் என்று முடிவு செய்தார். தினமும் ஒரு ஏழைக்கு ஒரு பிடி அரிசி தன் கையால் தந்தார். வருஷங்கள் ஓடின. மீண்டும் அந்த மகான் தன் ஊருக்கு வந்திருப்பதை கேள்விப்பட்டு அவரை காணச் சென்றார். அவர் ஒரு மரத்தடியில் அமர்ந்திருந்தார். சுவாமி, நீங்கள் சொன்னபடி ஒரு பிடி அரிசி தானம் கொடுத்து கொண்டு வருகிறேன். எனக்கு நிச்சயம் வைகுண்டம் போகும் வாய்ப்பு அமையும் அல்லவா என்று கேட்டாராம். அந்த மகான் ஒன்றும் பேசாமல் தான் அமர்ந்திருந்த அந்த மரத்தின் அடிப்பகுதியை தனது விரல் நகத்தால் கீறத் தொடங்கினாராம்.
பணக்காரரும் பொறுமையோடு காத்திருந்தார். ஆனால் அந்த மகானோ தொடர்ந்து அந்த அடிமரத்தை கீறிக்கொண்டிருந்தாராம். பணக்காரருக்கு கொஞ்சம் கோபம் வந்தது. ஐயா, நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் நீண்ட நேரமாக இந்த மரத்தை தாங்கள் நகத்தால் கீறிக்கொண்டிருக்கிறீர்களே என்று கேட்க, அதற்கு அவர், நான் இந்த மரத்தை என் நகத்தால் வெட்டி கொண்டிருக்கிறேன். இதை வெட்டி முடித்ததும் உன் கேள்விக்கு பதில் வரும் என்றாராம். கேட்ட பணக்காரருக்கு சிரிப்பு வந்தது. இவ்வளவு பெரிய மரத்தை உங்கள் விரல் நகத்தால் வெட்ட முடியுமா? கோடாலியால் வெட்டினாலே பல மாதங்கள் ஆகுமே என்றாராம். அதற்கு மகான், தினமும் ஒரு பிடி அரிசியை தானம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வைகுண்டம் செல்ல ஆசைப்படும் போது என் விரல் நகத்தால் இந்த மரத்தை வெட்ட முடியாதா என்று கேட்க, பணக்காரருக்கு அப்போதுதான் அதன் அர்த்தம் புரிந்ததாம். அந்த மகானிடம் மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு அன்று முதல் தன்னிடம் உதவி என்று வந்து கேட்பவர்களுக்கு அள்ளி அள்ளி கொடுக்க ஆரம்பித்தாராம். தன்னிடம் இருப்பதை இல்லாதவருக்கு முழு மனசோடு கொடுப்பதுதான் வைகுண்டம் செல்ல எளிய வழி. பணம் உள்ளவர்களெல்லாம் பணக்காரர்கள் அல்ல. அந்த பணத்தை ஏழைகளுக்கு கொடுப்பவன்தான் உண்மையான பணக்காரன். சுயநலம் உள்ளவன் தூற்றப்படுகிறான், பொதுநலம் உள்ளவன் போற்றப்படுகிறான். சுயநலம் என்பது ஒரு கால்பந்து போன்றது, பொதுநலம் என்பது புல்லாங்குழல் போன்றது. இரண்டிலுமே நிரம்பி இருப்பது காற்றுதான். ஆனால் ஒன்று முத்தமிடப்படுகிறது, ஒன்று உதைபடப்படுகிறது. புல்லாங்குழல் தன்னுள் வாங்கிய காற்றை வெளியே விடுகிறது, அதனால் முத்தமிடப்படுகிறது. ஆனால் கால்பந்து என்ன செய்கிறது? தன் உள்ளுக்குள் வைத்துக் கொள்கிறது, அதனால் உதைப்படுகிறது. பொதுநலம் உள்ளவர்கள் போற்றப்படுபவர்கள், சுயநலம் உள்ளவர்கள் புறக்கணிக்கப்படுவார்கள் என்று நமக்கு இதிலிருந்து புரிகிறதல்லவா? ஆகவே பக்தர்களே, நாமும் வாழ்க்கையில் எதை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறோம் என்பதில்தான் நம்முடைய உயர்வே இருக்கிறது. ஆகவேதான் பகவானிடம் மோட்சம் வேண்டும் வேண்டும் என்று கேட்டால் போகாது. அந்த மோட்சம் கிடைக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் செய்தால்தான் அந்த பகவான் நமக்கு மோட்சமோ வைகுண்ட பதவியோ எதுவானாலும் தருவார். ஆகவே இன்றிலிருந்து இந்த மாங்கல்ய பூஜை சமயத்தில் நாம் அந்த உறுதியை எடுத்துக்கொள்வோம். எப்படி ஒரு ஆச்சாரியனை பற்றுவது எம்பெருமானுடைய திருவடியை பற்றுவது போல் சொல்வார்கள். நேரடியாக எம்பெருமானை பற்றுவது அவரது கரத்தை பிடிப்பது போலவாகும். கையை பற்றினால் நாம் செய்த தவறுகளைக் கண்டு பகவான் சீற்றப்பட்டால் நம்மை உதறிவிடலாம். ஆனால் திருவடிகளை பற்றினால் கோபப்படுவோரால் கூட நகர முடியாது. ஆகவே ஒரு ஆச்சாரியனை பற்றி கொண்டு அவர் நமது சகல பாபங்களையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் பகவான் நமக்கு மோட்சம் தந்தே ஆக வேண்டும். ஆகையால் ஆச்சாரிய சம்பந்தத்தை பெறுவோம். அதையும் அந்த சங்கல்பத்தையும் இதோ இந்த மாங்கல்ய பூஜை சமயத்தில் நாம் நமக்காக உறுதி பெறுவோம். அதே போல நம்மிடம் இருப்பதை பிறருக்கு வழங்கி நாம் நம்முடைய நல்ல எண்ணத்தை கொண்டு எம்பெருமானை அடைவோம். இதோ இப்போது எம்பெருமானின் திருக்கரங்களால் தாயார்கள் இருவருக்கும் திருமாங்கல்யங்களை சமர்ப்பிக்க தயாராகிவிட்டார் அர்ச்சக சுவாமி. திருக்கல்யாண மந்திரங்களை சொல்லி முதலில் எம்பெருமானின் திருமார்பில் அகலாது வீட்டிருக்கும் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு இதோ திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிக்க தயாராகிக் கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. தானஹஸ்தே குருதா ததஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேனா லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபகே சாஜீவ சரதம். ஸ்ரீதேவ்யை நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜதா தந்திரயோ வேத அன்வஸ்ருத்யந்த தானஹஸ்தே குருதா அதஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேனா லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம். பூதேவ்யை நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து.
అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక మోదముతో నొకమాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంకర్మణి ఔపాసనాగ్నో ప్రధాన హోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసువా ఓం అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతా నాగం సోస్య ప్రజామంచంద్రమృత్య భాషాతే తతయకం రాజావృణో నమంజనాం గిధేయక స్త్రీ పౌత్రమగన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వృణస్త్రుదేహమద్యాజమృణయా వామవస్యనాజగే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా మందమాన సదాశాస్తే గీతమానో హవిర్భిః అహేణమానో వరణేహ బోదృశకం సమాన ఆయు ప్రమోషే స్వాహా త్వన్నో అగ్నేవర్ణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేణోపయాసతిష్ఠాః యజిష్టో వహ్నితమస్సోజడానో విశ్వాన్ ద్వేషాగం సిప్రమమధ్యస్వ స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే భమోతే నీతిష్టో అస్యావశతో వ్యుష్టో అవయక్షుణ వర్ణకం రడానో వేహమృడేకం సహవో నయేతి స్వాహా తమగ్నే అయాస్యాసన్మనసాహితః అయాసన హవ్యమోహితే జానో దేహిమేజడగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్స్తాః అనమతేన్వమగ్స్తాః సరస్వతేన్వమగ్స్తాః దేవసవిత ప్రాసావీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంకర్మణి ఔపాసనాగ్నో లాజహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసుమా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా ఓం ఇమాన్ లాజానామపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవణనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పజ్జన్యస్య శుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను విశ్వాభుతత్మజా వయం ధారాపుదన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఓం ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా
भूतायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वावुतत्वया वयन्धारा पुतन्या इव अतिगाहे महित्विषः ॐ इमान् लाजानापपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवणनां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युमभ्रूतेऽग्नौ लाजानापपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यजक्रमणे औपासनाग्नो सर्वप्रायश्चित्तार्थं ततो देवादिषट्वैष्णवहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा ॐ अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानदधेवदं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विश्वदिगतो व्रतानि विस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिमे विचक्षुणादरग् स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः नमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणे औपासनाग्नो कर्मधात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्त होमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा ॐ यतस्य कर्मणोऽतिरेरजं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निश्चस्विष्टकृत्वान् सर्वकृष्टिष्टकं जुहतं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते जुहतहुताहुतेनाङ्गामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनराः जातवेदा विजर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्धातुरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनायमञ्चक्षणादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वचनिष्टेभ्य स्वाहा भेषदृष्टै स्वाहा निष्कृति स्वाहा दवराधि स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि क्षेमहि स्वाहा समिदशितेजो मयधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्मा सप्तर्षगे सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ति सप्तयो नीरापणस्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुनिन्यो विमनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेद भुक्तं ज्योर्भुक्तं प्रथमे भुक्तं वोषाधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तं अग्निर्जैनं वेद जैनं ज्योर्जैनं प्रथमे जीर्णं वोषाधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरहिरहविषा घृतेन समादित्येन वशभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीतृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतपितरपितामहः प्रमदामहश्चाक्षय्यमस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसमिदप्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं यदम्बाजीक्वर्धमत्र मेधामश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुपदवा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमूक्ष्य ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति
आप्यायन्तामापवंशधयो मरुतां पृषदगिस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्य सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वश्यमतमोरसस्तस्य भार्गदेहनः उचतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमावो यस्य क्षयाय जन्वधः आपोचन यथा चनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्रयन्द्रयं दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय कृन्तमया देव परिपूर्णं तदस्तुते प्रायश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि मयि तानि शेषावशेषाणां कृष्णान् स्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அரியமா புரந்தரி முதல தேவதைகளை முன்னிட்டு கொண்டு நடக்கும் ராஜமோகம், பூர்ணாகுதி, பின்பு அஞ்சனமிடுதல் என்கிற திருஷ்டி கழிக்கும் நிகழ்வும் நடைபெற்றது. சீதா கல்யாணம், ருக்மணி கல்யாணம் இவற்றுக்கெல்லாம் இல்லாத சிறப்பு ஆண்டாள் கல்யாணத்துக்கு உண்டு. சீதா கல்யாணத்தில் ஸ்ரீராமன் வில்லை வளைத்து சீதையை மணந்தான். ருக்மணி கல்யாணத்தில் ருக்மணி தேவியை அவளுடைய சகோதரனிடமிருந்து மீட்டு கண்ணன் மணந்தான். ஆனால் கோதையை மணக்க அவர் எந்த வீர சாகசமும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏற்படவில்லை. கோதை தன் பக்தி என்கிற நோம்பினாலேயே பரந்தாமனுடன் ஐக்கியமானாள். அந்த ஆண்டாள் பாடிய வாரணமாயிரம் பாசுரங்களை இந்த தேங்காய்களை உருட்டும் சடங்கில் இப்போது அனுசந்தித்தார்கள். இனி அடுத்த நிகழ்வு மாலா பரிவர்த்தனம். ஆனிரை மேய்க்க நீ போதி அருமருந்தாவது அறியாய், கானகமெல்லாம் திரிந்து உன் கரிய திருமேனி வாட, பானையில் பாலை பருகி பற்றாதாரெல்லாம் சிரிப்ப, தேனில் இனிய பிரானே செண்பகப்பூ சூட்டவாராய் என்று தொடங்கி 10 பாசுரங்களில் செண்பகம், மல்லிகை, செங்கழுநீர், இருவாட்சி என்று அத்தனை புஷ்பங்களையும் சொன்னார் பெரியாழ்வார். பக்தர்களே, எம்பெருமான் புஷ்பப்பிரியன் என்பதற்கு இதைவிட வேறு சான்று வேண்டுமா? பெரியோர்கள் திருமலையே புஷ்ப மண்டபம் என்றுதானே சொல்வார்கள். ஆக அந்த புஷ்பப்பிரியனான எம்பெருமான் சூடிய புஷ்பமாலை முதலில் எம்பெருமானின் திருமார்பில் அகலாது வீட்டிருக்கும் அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாரிடம் வந்தது. அவள் சூடி அழகு பார்த்த பின் அதே மாலை எம்பெருமானின் திருத்தோள்களை வந்து அடைந்ததை இப்போது பார்த்தோம்.
பார்த்தோம். இனி அடுத்து ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டியாருக்கு அதோ அந்த புஷ்பமாலையை சூட்டுகிறார். சுவடிக் கொடுத்த சுடர்கொடி, பாடிக் கொடுத்த பைங்கிளி, அவள் சூடிய மாலை எம்பெருமானுக்கு எத்தனை ஓப்பாக இருக்கும். அது மட்டுமல்ல, அந்த பூக்கள் செய்த பாக்கியத்தை தான் நாம் என்ன என்று சொல்வது. ஆக மொத்தத்தில் இதை கண்ணார காணும் நம் கண்கள் செய்த பாக்கியமே பாக்கியம். அடுத்து இன்னொரு விசேஷமான சம்பிரதாயம். தாயார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு அருகில் கொண்டு சேர்த்து பின்பு அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதையானதும் தலம்புராலு என்கிற அக்ஷதாரோப்பண நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது. மங்கள அட்சதையை எம்பெருமானின் திருமுடியிலும் பிராட்டிமார்களின் சிரசிலும் சேர்க்க உள்ளார்கள். இதையடுத்து திருக்கல்யாணத்தில் பின்பு கற்பூர மங்கள ஹாரத்தி நடைபெற உள்ளது. பக்தர்களே, திருக்கல்யாணத்தை இருந்த இடத்திலிருந்தே சேவிக்கும் பாக்கியம் பெற்ற நாம் இந்த ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தாருக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு வர்ணனையை நிறைவு செய்கிறேன். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.